Yes, my dear students, let us do the second part of our the second video, and we continue the same chapter 4 matter. And this topic for this video is effect of heat on matter. So up to so far we have done physical properties and chemical properties of matter. We have done states of matter. We have done general properties of matter. Now we will see what happens when we heat some matter. So when heat is added to a body, so following changes takes place. Whenever you heat a body, what happens? आप कोई चीज़ गर्म करते हो तो क्या होती है? वो गर्म हो जाती है, right? गर्म हो जाती है means increase in temperature. एक्सपेंशन होते आप दूध रखते हो, उबल के पतीले से बाहर आ जाता है, एक्सपेंशन हो गई, राइट? साइज इंक्रीज हो गया. चेंज इन स्टेट, आप किसी सॉलिड को हीट करते हो, चेंजेस टू लिक्विड. लिक्विड को हीट करते हो, चेंजेस टू गैस, सो चेंज ऑफ स्टेट. देन हीट ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस एज कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड है, बर्निंग ऑफ वुड है. सो फॉर बर्निंग व्हेन यू हीट द वुड, it burns, and that is a chemical change. You will get carbon dioxide and ash. So these are the effects on heat or matter. So these effects are expansion, increase in temperature, change of state, and chemical change. Now first of all, let us do what is expansion. Now what happens, you know that the particles, if we take the case of a solid, the particles, they are uh, close to each other and they vibrate at their position. When we provide heat to the solid, the particles, they gain energy and they vibrate more vigorously, more, and they try to move away from each other. As a result, expansion takes place. Similarly, the particles of liquid and gases, they gain energy and they are forced further apart. So degree of expansion depends on the substance. सॉलिड में एक्सपेंशन कम होगी क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही कम है पार्टिकल्स के एक दूसरे से दूर जाने के लिए. बट लिक्विड्स और गैसेस में एक्सपेंशन जो है ज़्यादा होगी क्योंकि उनके अंदर पहले से स्पेसिस है मॉलिक्यूल्स में. फॉर अ गिवन राइज इन टेम्परेचर, द लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स. Gases expand enormously on heating. Now we will see this expansion in solid, liquid and gases through these activities. Ball and ring experiment you have already done, as I have sent you in question answers. So you can see in the diagram we have taken this setup is, we have taken a metal ball that passes through a ring at a normal temperature. When we heat the ball, you can see in the diagram B, it after heating, it does not pass through the ring. The same sized ball, it does not pass because its size has increased due to heating. So it showed little expansion. You can see the other activity here, bar and gauze experiment. You can see this bar totally fits in this gauze, but on heating the bar, its size increases and it does not fit into this gauze. So this shows expansion in solids. Now to show expansion in liquids, we take a round bottom flask, we take rubber cork and a capillary tube and a burner and stand. In flask, we put some water and we insert this capillary tube inside the flask through a cork. When we you note the water mark in the tube, right? Now start heating this water. You will see the water level has risen in the tube. This is because expansion of water due to heating. Next is expansion in gases. So in this case what we take an empty flask, right? एंड उसके साथ हम एक वन होल्ड रबर कॉक लेंगे और एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब और उसको स्टैंड पे लगाएंगे एंड अ ग्लास ऑफ वाटर और टम्बलर ऑफ वाटर. व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग द दिस flask, what will you see? You see the bubbles are coming in the glass. इस ट्यूब का एक सिरा बॉटल के अंदर है, बॉटल अंदर से खाली है, राइट?
और दूसरा सिरा पानी के अंदर है। सो जैसे ही हम इस फ्लास्क को गर्म करते हैं, द बबल्स वी कैन सी इन द ग्लास। ये बबल्स कहाँ से आ गए? जो एयर उसके अंदर थी गर्म होने पे वो फैली और बाहर निकल रही है। बाहर निकलने के लिए क्या, ये पाइप से बाहर आएगी, ट्यूब से, और पानी के अंदर जाके वो बबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़, अब ये एयर क्यों आई बाहर? क्योंकि वो एयर एक्सपेंड हो रही है ड्यू टू हीटिंग। सो दिस इज एक्सपेंशन इन गैसेस. So this is first effect of heat. Then increase in temperature. When heat energy is added to substances, क्या होगा? वो गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज बिकॉज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज. Then change in state. When the temperature is added to a substance, to any state of matter, it changes. You can see in the diagram, ice on heating changes to water, water on heating changes to steam. So this is change in state. Then chemical change. When a substance is heated, permanent and irreversible changes occur. Permanent means जैसे आपने लकड़ी जलाई है तो उसकी राख बन जाएगी। आप राख, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी चीज़ आपको मिली है उसको वापस से आप लकड़ी नहीं बना सकते हो, बिकॉज केमिकल प्रोसेस इज़ अ केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज, राइट. सो वी कैन नॉट, जैसे आपने पानी से बर्फ़ जमाई है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। आप बर्फ़ को पिघला के दोबारा पानी बना सकते हैं, बट आफ्टर केमिकल चेंज यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस बैक. सो chemical substances, chemical changes do take place with the help of heat. Then there is one small topic, that expansion of solids. Solids have three types of expansion. First is linear expansion. अगर आप एक लोहे की छड़ है, अब आयरन रोड या कोई भी कॉपर रोड, मेटल रोड, यानी अगर आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा? उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, राइट. सो दैट इज लीनियर एक्सपेंशन. When the area of the solid increases, if you have a sheet of metal and you heat it, what will happen? Its length and breadth both will. So length and breadth means area of the sheet will change. So that is known as areal or superficial expansion. And if you have a cube or sphere, as in ball and this ring experiment, the ball, the volume of the ball has increased. So that is known as the cubical expansion. So this is all about the effect of heat on matter. So read all these effects and all these activities and do book exercise. That is all with the chapter 4, my dear students. Now start revising and complete your notebook and send on my WhatsApp number so that I can check your notebooks. Thank you and have a nice day.